Good afternoon, students. Now, the topic of today's discussion is Introduction to Tannins. Now, starting with the topic. First of all, before proceeding, you should know what the term tannin is. Tannin is coined by the Seguin, means the scientist Seguin, in the year 1796. Tannins are naturally occurring complex organic compounds, means basically they are complex in nature and are organic compounds. These are secondary metabolites of the plants like alkaloids and glycosides, which possess the high medicinal property too. It possesses nitrogen-free polyphenols ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट. बेसिकली जो टेनिन्स होते हैं उसमें पॉलीफेनॉल्स प्रेजेंट होते हैं. उन पॉलीफेनॉल्स का बेसिक स्ट्रक्चर है ये बेंजीन रिंग, 3 OH moieties, 4th OH moiety and a ketone group. Now the definition of tannins. These are polyphenolic substances which are found in many plant products of secondary metabolism. Means these are the products of secondary metabolism. ठीक है. Its water soluble nature allows easy extraction and also are very useful in various applications in the chemical and pharmaceutical industry too. The complex organic non-nitrogenous polyphenolic substances means ये हैं जो definition होगी इसकी tannin की particularly क्या होगी. These are complex organic non-nitrogenous means nitrogen containing group नहीं होगा इसमें, polyphenolic substances of higher molecular weight. This is the basic definition of tannins. They are used as antiseptics and in GIT diseases like diarrhea and also used in leather industries. Basically आपको tannins से याद रखना है. It is a GPAT important question that these are used as antiseptics and in leather industry because they precipitate the proteins. जो tannins की properties होती हैं, tannins का जो काम होता है वो होता है कि they precipitate the proteins. ठीक है, तो ये इसकी particular definition है. Now physical properties. Color dark brown or reddish brown. Taste puckering taste. State non-crystalline state. Solubility basically soluble in water, alcohol, dilute, alkalis, glycerols and acetone. Physical properties क्या है? They are non-crystalline compounds. They are soluble in water, forming colloidal solutions with acidic reaction and have sharp astringent taste. ठीक है. They are soluble in dilute alkalis, alcohol, glycerol and acetone, but only sparingly soluble in other organic solvents. Their solutions precipitate heavy metals, alkaloids, glycosides and proteins. Example is gelatin. Chemical properties में इसकी एक एक करके हम chemical properties को explain करेंगे. First chemical properties precipitation. Second is antioxidizing properties. Third is astringent property. Fourth is carcinogenicity. Next is reaction with salts, reaction with potassium ferricyanide and ammonia. Now the first property is precipitation. Now tannins have the ability to precipitate solutions of gelatin, alkaloid, glycoside, heavy metals and proteins. Next, antioxidizing properties. Because of the accumulation of OH group on small size nucleus. On small size nucleus, these agents have the antioxidant nature. क्योंकि इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, स्मॉल साइज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका एक एंटीऑक्सीडेंट नेचर है. नेक्स्ट, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी. टैनिन्स हैव प्रॉपर्टी टू रिएक्ट विद प्रोटीन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कॉज प्रेसिपिटेशन. ठीक है, टैनिन्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो रिएक्ट करती है प्रोटीन्स के साथ, म्यूकस मेम्ब्रेन में जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और उनका प्रेसिपिटेशन करती है. ये इसकी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट, कार्सिनोजेनिसिटी. प्रोलॉन्ग यूज ऑफ टैनिन कंटेनिंग प्लांट मटेरियल इज वेरी हैजार्डस बिकॉज इट कॉजेज कैंसर. Habitual use of Erica catechu is a tannin containing drug, can cause oral and esophageal cancer. Next, reaction with salts. Hydrolyzable tannins plus ferric salt gives blue-black precipitates.
कंडेंस टैनेंस प्लस फेरिक सॉल्ट ब्राउनिश ग्रीन प्रेसिपिटेट्स. अब ये हाइड्रोलाइजेबल टैनेंस और कंडेंस टैनेंस क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट, रिएक्शन विद पोटेशियम फेरिसाइनाइड एंड अमोनिया. टैनेंस प्लस पोटेशियम फेरिसाइनाइड और अमोनिया गिव्स डीप रेड कलर. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ टैनेंस. मेडिसिनल यूजेस हैं एज एंटीडोट, एंटीसेप्टिक, एल्जीसाइडल्स, एस्ट्रिंजेंट्स, एंटी कार्सिनोजेनिक. Biological activities: inhibition of lipid peroxidation, they decrease in blood urea nitrogen content, inhibition of plasmin, lipolysis in fat cells. Industrial uses are manufacturing of ink, tanning, vegetable tanning, and preservatives. Now the classification of tannins. They are basically classified into two categories. First is true tannins, second is pseudotannins. True tannins are high molecular weight compounds and pseudotannins are low molecular weight compounds like gallic acid and flavonol. ठीक है. Now true tannins are further divided into three categories. First is hydrolyzable tannins, second is condensed tannins, and third is complex tannins. नाउ हाइड्रोलाइजेबल टैनेंस में आपका एग्जांपल है पायरोगेलॉल, कंडेंस टैनेंस में एग्जांपल है कैटिकॉल, कॉम्प्लेक्स टैनिन दोनों का मिक्सचर. ठीक है. नाउ हाइड्रोलाइजेबल टैनेंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज गैली टैनेंस एंड सेकंड इज इलैगी टैनेंस. ये भी आप पूरा फर्दर पढ़ेंगे. नाउ classification. The tannins are basically classified into two groups based on the complexity of their chemical nature and according to the behavior on dry distillation. First है आपका hydrolyzable tannins. As the name indicates, these tannins are hydrolyzed by acids or enzymes. मतलब ये hydrolyze हो जाते हैं by acids or enzymes very quickly, and the products of hydrolysis are gallic acid and ellagic acid. ऑन ड्राई डिस्टिलेशन, जब हम ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, सबसे पहले तो जो हाइड्रोलिसिस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और एंजाइम्स, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे गैलिक एसिड और इलैगिक एसिड में. अब फर्दर ड्राई डिस्टिलेशन होगा तो गैलिक एसिड और सेवरल अदर कंपोनेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे पायरोगेलॉल में. दे रिस्पॉन्ड टू फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन विच प्रोड्यूसेस ब्लू कलर. The examples of hydrolyzable tannins are gallotannin in nut gall. Nut gall is a crude drug. Rhubarb, amla, clove, and chestnut. Elagitannin from oak, myrobalans, and pomegranate bark. Now you can see the products of hydrolyzable tannins like gallic acid, glucogallin, pyrogalol, and ellagic acid. Now जो आपके दो थे, आपके जो आपने अभी पढ़ा, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स दो तरीके के हैं, गैली टैनिन्स एंड इलैगी टैनिन्स. अब इनमें क्या डिफरेंस है? इनका बेसिक डिफरेंस है अकरेंस में गैली टैनिन्स की अकरेंस है रूबाब, क्लोव एंड हेमामेलिस. दीज आर द क्रूड ड्रग्स. एंड इलैगी टैनिन्स आर प्रेजेंट इन पोमेग्रेनेट एंड यूकेलिप्टस. जब इनका हाइड्रोलिसिस होगा, जब हमारे हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा? Upon acid hydrolysis of galley tannins, gallic acid is produced. Upon acid hydrolysis of ellagic tannins, ellagic acid is produced. Now the properties. Galley tannins are rapidly soluble in water. Free gallic acid in plant is converted to glucogalley tannins. Ellagic tannins are slowly soluble in water. They are present in plants in open and ring form as hexa-hydroxy diphennic acid. Now next category is condensed tannins. They are also known as non-hydrolyzable tannins, means they cannot be hydrolyzed, or phyoba tannins or proanthocyanidins. They are much resistant to hydrolysis, means hydrolysis के लिए वो resistant होते हैं. They are related to flavonoid pigments because they are formed via derivatives of flavons. वो होते हैं हमारे जो फ्लेवनॉल कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड होते हैं क्योंकि ये बनते हैं फ्लेवॉन्स मोइटीज से, लाइक कैटेचिन और फ्लेवॉन 3-ऑल और फ्लेवॉन 3,4-डाइऑल. अनलाइक द हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, on treatment with enzymes or mineral acids, they are polymerized or decomposed into red colored substances called flobafenes.
जैसे हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स होते हैं उसमें एसिड और एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होता है, इसमें पॉलीमराइजेशन हो जाता है और वो डिकम्पोज हो जाते हैं रेड कलर के सब्सटेंसेस में, जिसको क्या बोलते हैं, जो रेड कलर के सब्सटेंसेस में डिकम्पोज होंगे उन्हें बोलते हैं फ्लोबाफीन्स, which are basically insoluble in water and also indicate the typical brownish red color of many plants in drugs color. On dry distillation further they yield catechol. ठीक है, जब हम फर्दर इनका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो उसमें ये कन्वर्ट हो जाएंगे कैटिकॉल में. Tannins with ferric chloride produces brownish green color unlike hydrolyzable tannins. Hydrolyzable tannins में blue color produce हो रहा था. They are distributed in different parts of plants. The green tea and hamamelis leaves, cinchona, cinnamon and wild cherry bark, pale and black catechu containing these type of tannins. ठीक है. Next is pseudotannins. This is not as such a separate group of tannins but may be treated as subgroup because they do not obey to Gold-Beater skin test. Gold-Beater skin test is the main test for the identification of tannins. ठीक है, तो ये नहीं ओबे करता Gold-Beater स्किन टेस्ट को, इस वजह से इसको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं. एंड आर लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स टू. क्लोरोजेनिक एसिड इन कॉफ़ी and Nux vomica, epiquinic acid and ipecacuanha and catechins in cocoa are examples of pseudotannins. ये क्या है? ipecacuanha एक हमारी ड्रग है जो कि हमारे वॉमिटिंग में यूज़ होती है, वॉमिटिंग कराने के लिए. ठीक है. The detection of test for chlorogenic acid is carried out by extracting the drug with water. Now the complex tannins. These tannins are mixtures of both, that is hydrolyzable and condensed tannins का mixture होता है complex tannins. Examples हैं इसके tea, quercus and castanea. Now tannin containing drug, hydrolyzable tannins में आपके हैं myrobalan, bahida, amla and arjuna. Non-hydrolyzable tannins means condensed tannins हैं ashoka, black catechu, pale catechu, pterocarpus. Now this is a very important question for GPAT and your according to HPTO and various other syllabus. What is the basic difference between true tannins and pseudotannins? Pseudo means क्या होता है? False. ठीक है. The true tannins और false tannins. The true tannins आपकी definition है polyhydroxyphenolic compounds which get converted एनिमल हाइड टू लेदर, मतलब जो एनिमल हाइड्स होते हैं उनको लेदर में कन्वर्ट करता है बाय प्रेसिपिटेटिंग द प्रोटीन्स एंड गिव्स द पॉजिटिव Gold-Beater स्किन टेस्ट. दे आर नोन एज ट्रू tannins. नाउ pseudotannins क्या है? फेनोलिक कंपाउंड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन दैट डोंट कन्वर्ट एनिमल हाइड टू लेदर बट टू गिव पॉजिटिव Gold-Beater स्किन टेस्ट आर कॉल्ड pseudotannins. ठीक है. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ट्रू tannins इज अबाउट 1000 to 500 and molecular weight is less than true tannins. Now the identification test. Identification test, you can see identification test में पहला है gelatin test. To a solution of tannin, aqueous solution of 1% gelatin and 10% sodium chloride are added. A white buff colored precipitate is formed which confirms the presence of tannins and pseudotannins. Next is Gold-Beater skin test. In this test, a small piece of Gold-Beater skin, that is membrane prepared from the intestine of ox, ठीक है, is soaked in 20% hydrochloric acid and rinsed with distilled water and placed in a solution of tannin for about 5 minutes. The skin piece is washed with distilled water and kept in a 1% solution of ferrous sulfate, which gives a brown or black color is produced on the skin due to the presence of tannins. ठीक है. This is the very important test for tannins. Next is phenazone test. A 10 ml of aqueous extract of a tannin and sodium acid phosphate is heated and cooled and filtered. A 2% solution of phenazone is added to the filtrate. A bulky colored precipitate is formed. Next is matchstick test, that is also known as Catechin test. A matchstick is dipped in aqueous plant extract, मतलब कोई भी plant extract जो कि tannin containing drug होगी जिसमें,
dried near the burner and moistened with concentrated hydrochloric acid. On warming near flame, the matchstick wood turns pink or red due to the formation of fluoroglucinol. Next, test with ferric chloride. To a solution of tannins and ferric chloride solution, a blue, black, violet or green precipitate or color confirms the presence of tannins. This is the important test for tannins. Thank you. If you still have any doubt, you can ask in Google Classroom and in comment section. Thank you.